Yes. चलो, तो let us start with the MCQs. Okay. कल कौन सा MCQ हम कर रहे थे एक्चुअली? सर 14th वन। हाँ राइट, 14th राइट। ओके, उसका एक्चुअली मैंने बाद में देखा तो ये देखो, हमने इधर तक किया था बराबर है। अभी इसमें हमने इधर इधर तक तो पहुंच गए थे कि उसका जो, सॉरी ये नहीं, ये अलग है। Just wait. यस, यही वो एग्जांपल देखो। तो अभी इसमें हमने इधर तक तो हमने किया था कि CV का जो वैल्यू है तो वो 20/7 इंटू R, इधर तक तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो एक्चुअली दिस इज ओनली गोइंग टू बी द आंसर हियर। यहाँ से ही हमको आंसर मिलने वाला है। और इवन यहाँ पे गैमा का भी वैल्यू हम निकाल चुके थे। तो ये देखो, गैमा का जो वैल्यू हमको मिला था तो वो एक्चुअली 1.35 मिल रहा था बराबर है। तो ये 1.35 is very very close to this 1.4 actually, and hence we can select that this gas must be a diatomic one. एक्चुअली उसका आंसर डायटोमिक ही है, ठीक है, डायटोमिक एक्चुअली। लेकिन मैंने ये सोचा कि इतना बड़ा अप्रोक्सीमेशन करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए ट्राई कर रहा था। बट उसमें उतना अप्रोक्सीमेशन चल जाता है, ऐसा वो बोल रहे थे। मतलब और इवन इसमें भी ये 20/7 इंटू R, ये भी अगर देखते हो ठीक से तो इसको अगर फ्रैक्शन में, अगर डेसिमल में अगर वर्कआउट करो तो वी नो दैट 7 2s are 14 and sorry, so 7 2s are 14 पॉइंट, एंड यहाँ पे आ जाएगा 6 बचेगा। तो 6 मतलब वो 60 हो जाएगा। और 7 8s are, बराबर है। तो 7 8s are मतलब ये 2.8 के आसपास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, 2.8 टाइम्स ऑफ R। एंड जैसा कि हम जानते हैं डायटोमिक गैस के लिए, फॉर द डायटोमिक गैस we know that the value of CV is actually 5/2R. If you remember, CV value of diatomic gas is always 5/2R. ये तो पता होगा सभी को। And CP is actually 7/2R. So that means this 5/2 can be written as 2.5 actually, right? So this 2.5 into R, and this is again approximately we can say that this is same as this one only. तो इससे हमको पता चलता है कि 2.8 एंड 2.5 इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो और उतना डिफरेंस मतलब उन्होंने इतना एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई सम्स जो है तो वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की वजह से उनका आंसर कुछ और आता है और हमको लगता है कि वो डिफिकल्ट है। एक्चुअली वो डिफिकल्ट नहीं होता है, वो एक्चुअली उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हमको यूज करने पड़ते हैं। और कहाँ तक अप्रोक्सीमेशन यूज करना है वो उसमें भी एक्चुअली क्वेश्चन में भी एक्चुअली क्लियर नहीं दिया रहता है। तो उसकी वजह से हमको थोड़ा बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो है 2.5 R is the value of CV for diatomic gas, and we are going to get we are getting it as a 2.8 R, which is approximately same only. So we can say that the gas must be diatomic. But confusion will be created because mixture of monatomic and diatomic is also given here, करेक्ट है। बट एक बात हम इसको ओवरऑल भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि अगर मोनोएटॉमिक और डायटोमिक इन दोनों का अगर मिक्सचर होगा तो उसका जो CV का वैल्यू है, या सॉरी गैमा का जो वैल्यू है, वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए ना। फिर 1.4 से ज्यादा और 1.67 से कम आना चाहिए ना। जबकि हमारा जो वैल्यू यहाँ पे हमको गैमा का जो वैल्यू मिल रहा है तो वो एक्चुअली 1.35 मिल रहा है, जो कि 1.5 से भी कम है। तो इसका मतलब वी शुड से दैट इट इज गोइंग टू बी द मिक्सचर ऑफ द नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक एंड वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैस।
तो आखिर वो तो है तो डायटोमिक ही ना ओनली। तो इसलिए अगर गामा का वैल्यू 1.29 भी आ जाता है तो भी हम उसको डायटोमिक ही कहेंगे, भले वाइब्रेटिंग है बट है तो डायटोमिक ना। और अगर वैल्यू जो है गामा का वो 1.4 भी अगर आ जाता है तभी भी हम उसको डायटोमिक ही कहेंगे, हाँ, भले वो है नॉन वाइब्रेटिंग एक्चुअली। तो नॉन वाइब्रेटिंग हो या वाइब्रेटिंग हो, दोनों डायटोमिक के ही टाइप्स है ना। तो इसलिए इतना तो क्लियर है कि इट इज गोइंग टू बी अ डायटोमिक वन, ठीक है। वेदर इट मे बी वाइब्रेटिंग और इट मे बी नॉन वाइब्रेटिंग, or it may be the mixture of vibrating as well as non-vibrating gases, and that's why we can conclude it as a diatomic gas। और इवन सीवी से भी, सीवी को यूज करके भी हम वो कंक्लूड कर सकते हैं, देखो, क्योंकि सीवी का वैल्यू तुमको पता है डायटोमिक के लिए कितना होता है, वाइब्रेटिंग नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक के लिए, ये तो हमने अभी यहाँ पे जो लिखा वही है, बराबर है। वो जो नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक के लिए ही होता है वो 5/2 R, करेक्ट है। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी फॉर नॉन वाइब्रेटिंग diatomic gas, right? But if we consider the vibrating diatomic gas, then the value of Cv happens to be actually 7/2R, if you remember. So 7/2R. If we work this out in decimals, then this value comes out to be 3.5R, correct है। So एक तरफ हमको मिल रहा है 2.5R और दूसरा लिमिट मिल रहा है 3.5R। तो इन दोनों में से कुछ भी अगर वैल्यू सीवी का आता था तभी भी हम उसको डायटोमिक ही बोलते थे, भले नॉन वाइब्रेटिंग हो या वाइब्रेटिंग हो, बट है तो वो डायटोमिक। एंड वैल्यू ऑफ सीवी वी आर गोइंग टू गेट हियर इज जस्ट 2.8R, which is going to be between this, ओके। तो ये दोनों के बीच में आ रहा है वो, तो इससे वो बड़ा है, 2.5R से बड़ा है और इससे वो छोटा है, तो बिल्कुल यहाँ पे बीच में वो लाई कर रहा है। जिसका मतलब ये होगा कि इट गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ डायटोमिक गैस एंड, मतलब नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैस एंड vibrating diatomic gas, but both are the types of diatomic gas itself, and that's why we can conclude that or be sure that this gas is going to be a diatomic for sure, okay। so in this way we can solve this। चलो next one। शायद हमने इसके ऊपर के कुछ किए नहीं किए। yes, check this 12th one। Okay, just read this question carefully. See, when a system is taken from the state I to F along the path IAF, okay, can you see that path IAF? Yes, this is I, this is A, and this is F. So when we take this system along this path, that is from IAF, यहाँ से लेके इधर तक अगर हम उसको लेके जाते हैं,
Okay. I hope all of you can read this. Okay, the along the path IAF. तो जब हम उसको IAF इस path से लेके जाते हैं, it is found that the Q is equal to 50 calorie. Okay, that means the heat absorbed by this gas is going to be 50 calorie. Yes, and work done here in this case is given to be 20 calorie, right? And along the path IBF, that means this one here. ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लेके जाते हैं इस path से, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, the amount of heat absorbed is going to be 36 calorie and the work done along that path is to be found out. Yes. तो देखो इसमें होता क्या है ना कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, and after all we know that since initial point and final point is the same in both of these paths, अगर देखो ठीक से तो ये फर्स्ट जो पाथ दिया हुआ है वो IAF है और सेकेंड पाथ इज गिवन हियर, इट इज IBF, राइट? सो IAF में और IBF में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कॉमन है, तो जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कॉमन होता है तो उसमें स्टेट फंक्शन जो है, तो स्टेट फंक्शन विल बी सेम, एंड वी नो दैट आउट ऑफ दिस dq, du and dw, you know that this du only is going to be a state function, करेक्ट है? तो सिर्फ du ऐसा है जो स्टेट फंक्शन कहलाता है, तो इसलिए उस केस में हमको यहाँ पे लिखना है कि du और dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये इक्वेशन हम दोनों पाथ्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो देखो व्हेन वी विल यूज इट इन द फर्स्ट पाथ दैट इज IAF, ठीक है? तो IAF के अंदर अगर उसको यूज करेंगे तो देखो dq का वैल्यू कितना होगा, 50 कैलोरी जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 डाल देंगे इस तरफ, फिर du हमको पता नहीं कितना है, प्लस यहाँ पे dw कितना है फर्स्ट पार्ट में, देखो 20 कैलोरी दिया हुआ है, सो ये 20 यहाँ पे डाल देंगे, तो इससे हमको मिल जाएगा 50 minus 20 is equal to du, which means du is actually going to be 30 calorie, करेक्ट है? तो एक तरफ हमको मिल गया कि इस IAF पाथ के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना मिल रहा है, 30 calorie. Okay, give this equation number 1. Now if we use the same equation for the second path, that is IBF path, तो इस IBF path के अंदर अगर हम ये यूज करेंगे इक्वेशन, सेम इक्वेशन, तो देखो क्या होगा, तो उस केस में हमको यहाँ पे मिलेगा कि फिर से एक बार dq is actually going to be equal to du plus dw. Here dq is already given, that is 36 calorie, correct है? And du is not given, but we can use this value of du which is in another path for this path also, just because the change in internal energy is just a path function, and that is the concept that is we have to use here, and plus dw kept as it is, so that we can find out dw easily, and we can get it as 36 minus 30, that is 6 joule, as a simple one. So it's that simple, तो इतना सिंपल तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं आराम से। So 6 calorie, this A is going to be actually the correct option, समझा ठीक से? चलो go to the next. Just see this, 14 तो हो गया ना? Okay, 15 वाला देखो एक बार ठीक से। A system goes from A to B via the two processes delta U1 and delta, if delta U1 and delta U2 are the changes in internal energies respectively, okay, then what will we choose from these options? Obviously delta U1 is going to be equal to delta U2. अभी बताया कि change in internal energy is going to be simply the state function, so that's why it will depend only on the initial state and final state. So that's why even if the path are different, this is the another path and this is another path, but still in both of these paths we can see that the delta U1 and delta U2 will be the same. Okay, sure. Next one here,
that is 16th here, 16th question. The temperature entropy diagram of the reversible engine is given in figure. Its efficiency is, yes, देखो यहाँ पे ये टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम दिया हुआ है. अभी इसमें हमको टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम के बारे में कुछ चीजें याद रखना जरूरी है. See this here. This is the temperature entropy diagram. पहले मैं तुमको बताता हूँ in general about the temperature entropy graph. Suppose this is the temperature entropy graph. So we know that entropy, change in entropy is actually defined as the amount of heat absorbed upon absolute temperature. Correct है? So इसको use करके हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि this dq is actually going to be equal to T into ds for a very small interval. And if we just integrate this, तो यहाँ पे इसको अगर integrate करेंगे तो हमको मिलेगा total the amount of heat absorbed. We can call it as Q1 or simply Q. It is going to be equal to integration of this T into ds. Okay, तो ये हो गया हमारा amount of heat absorbed, right? Yes. अभी इसमें देखो यहाँ पे साइकिल दिया हुआ है, तो ये साइकिल सपोज यहाँ से स्टार्ट होता है और सपोज इधर से इधर तक पहले जाता है और फिर इसका डायरेक्शन ऐसा दिया हुआ है और फिर इधर से इधर तक and then from this point to this point here. Yes. So अभी इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे ये जो है पॉइंट, ये इसको हम बोल सकते हैं 2T0. ये पॉइंट जो है वो T0, ये दिया हुआ है S0 और ये है हमारा 2S0. ओके, तो ये बात अच्छी तरह से याद रखो. द इंटीग्रेशन ऑफ T into ds is actually going to be the amount of heat absorbed, and we also already know that the integration also means the area under the curve. करेक्ट है? सो इंटीग्रेशन को हम एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से भी निकाल सकते हैं. बिल्कुल. तो इसलिए फिर यहाँ पे ये जो एरिया अंडर द कर्व आने वाला है तो वो हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब मिलने वाला है हमको. ठीक है, तो अभी इसमें एक बार देखो कि इन द फर्स्ट पार्ट, इफ यू फोकस ऑन दिस फर्स्ट पार्ट ओनली, सपोज ये फर्स्ट पार्ट मतलब इधर से, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक देखो ठीक से, तो ये जो फर्स्ट पार्ट हमको दिख रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, राइट? और इंट्रोपी जो है वो बढ़ रहा है. यस. तो अभी इस प्रोसेस के अंदर हम देख सकते हैं ओके, तो इस प्रोसेस के अंदर जो भी हीट इवॉल्व किया गया वो एक्चुअली Q1 रहने वाला है. Q1 मींस द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, तो वी कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग द एरिया अंडर दिस कर्व. सो कैन यू शेड द एरिया अंडर दिस कर्व? तो ये जो ए बी वाला पार्ट है उसके जो नीचे का एरिया है तो वो हम इस तरह से शेड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर से शेड किया हुआ है. दिख रहा है ठीक से? So this area will actually be the Q1. ठीक है ना? Q1 means the amount of heat absorbed by the engine. So this Q1 can actually be found out to be equal to, अच्छा चलो एरिया कितना है आएगा यहाँ पे, इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कितना बनता है. तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला बना हुआ है जो कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द हाइट. करेक्ट है? तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ into what are the sum of parallel sides. Which are the parallel sides here? We can see clearly that this and this is nothing but the parallel sides. So this first side is having the length that is equal to 2T0. Correct है? And this second side here is having the length of T0.
So what is the sum of parallel sides obtained here? तो देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब यहाँ पे टी नॉट प्लस 2 T0 हम डाल देंगे इधर, and multiplied by the height. What is the height of this trapezium? It is going to be this distance here. ये जो distance हमको मिल रहा है तो वो actually height है trapezium का, और इसलिए वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, simply 2s0 में से s0 माइनस करना पड़ेगा. That is we are going to get it as q1. So q1 जो हमको मिल रहा है तो वो इसको निकालो फटाफट, 3T0 upon 2, and that is multiplied with s0 only. So we can call it as simply 3/2 times of T0 s0. Okay, so this is actually going to be the q1. Yes, and now the second process in the question here. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो सेकेंड वाला प्रोसेस दिया हुआ है वो कौन सा है, देखो ठीक से, it is from B to C. If you can call this point as C, इस पॉइंट को अगर हम C नाम देके रखते हैं तो B से C की तरफ ये सेकेंड प्रोसेस है. तो इस प्रोसेस के अंदर जो हीट इवॉल्व किया गया तो दैट इज गोइंग टू बी दिस Q2 हियर, व्हिच वी कैन शेड इट बाय दिस पोर्शन, रेड कलर पोर्शन. तो ये जो रेड कलर से जो शेड किया हुआ रीजन है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी Q2, राइट. एंड दिस Q2 कैन बी फाउंड आउट टू बी सिंपली द एरिया ऑफ दैट रीजन, व्हिच इज सिंपली द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, and we know that the length of this rectangle is simply 2s0 minus s0, which is s0 only, and that is multiplied by breadth, which is going to be T0 only. So that we can just simplify this and get it as s0 into T0 or T0 into s0. That's it. And this is actually going to be Q2 here. And now we'll see the efficiency. What is the formula for efficiency? Efficiency के लिए हमको मिलता है work done upon Q1, where work done is nothing but Q1 minus Q2, and that is to be divided by Q1. So if we just replace all these values, or just simplify this and get it as 1 minus Q2 by Q1, right? And if we just replace it here, then we get this 1 minus Q2, which is here T0 S0, and Q1, which is nothing but 2 times of T0 S0. So if we just take the ratio here, then we get this T0 S0 upon 3/2 times of T0 S0, so that this T0 S0 gets cancelled, and we are left with 1 minus 2/3, no, sorry, 2/3, which is actually going to be 1/3, which is going to be the correct option. So here the efficiency of that heat engine will actually be equal to 1/3, which is already there in this option number C here. Okay. Just check this here. Question number 20. Yes, during an adiabatic process, the pressure of the gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. That the ratio of Cp to Cv is. That means simply what we have to do is, see, it's given that yes, during an adiabatic process, the pressure of the gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. What does it mean? P is going to be proportional to T cube. ये दिया हुआ है. Okay. And we want to find out this Cp to Cv ratio. What does this mean? Cp to Cv ratio मतलब ही क्या हो गया? वो तो गैमा हो गया. और हमको ऑलरेडी पता है कि P और T के बीच में जो रिलेशनशिप होता है in case of an adiabatic process, we already seen that देखो ठीक से P raised to gamma upon T raised to gamma minus 1
is always constant. Correct है? So you already proved in case of an adiabatic process, P raised to gamma upon T raised to gamma minus 1 remains a constant. And we can also prove it using this PV raised to gamma is equal to constant. Because if we just replace this V by using ideal gas equation, तो PV इक्वल टू nRT होता है, तो V इक्वल टू क्या होगा, nRT अपॉन P होगा, और रेस टू गैमा एज इट इज आएगा और इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा. और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा P इंटू, अच्छा ये nR रेस टू गैमा तो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट के नीचे चला जाके वो कांस्टेंट ही बन जाएगा, और यहाँ पे सिंपली T रेस टू गैमा आएगा और नीचे P रेस टू गैमा भी आएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. यस, सो इट मींस ओके, तो ये P रेस टू गैमा माइनस 1 आएगा. सो हियर वी हैव टू मेक द करेक्शन. Yes, so we have to say that T raised to gamma upon P raised to gamma minus 1 remains constant. Okay, which also means that, see, if we write this in other form, then we can write it as T raised to gamma is proportional to P raised to gamma minus 1. लिख सकते हैं ऐसा. इसको उल्टा करके ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो कि P raised to gamma minus 1 is proportional to T raised to gamma, क्योंकि हमको ऐसा बनाना है उसको. ठीक है, तो अभी अगर गैमा माइनस 1 यहाँ पे इधर है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए फिर यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, रेजिंग बोथ साइड्स बाय 1 अपॉन गैमा माइनस 1. ओके, तो इफ यू जस्ट रेज दिस P रेज टू गैमा माइनस 1 बाय 1 अपॉन गैमा माइनस 1, and also this T raised to gamma, raise it to 1 upon gamma minus 1. Okay, so in that case we can get in the next step, so this gamma minus 1 and gamma minus 1 just will get cancelled. करेक्ट है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a raised to m raised to n क्या होता है, a raised to mn ही होता है, तो इस वजह से यहाँ पे p आ जाएगा, and we can say that it will be proportional to what, T raised to this gamma will be in the numerator and gamma minus 1 will be there in the denominator. And now if we just compare this equation with the equation which is given here, see here it says that P is given to be proportional to T raised to 3, and we have proved that in adiabatic process P happens to be proportional to T raised to gamma upon gamma minus 1, which means that gamma upon gamma minus 1 must actually be equal to 3. And if we just solve this further, then we can get this gamma is going to be equal to 3 gamma minus 3, which means that 3 must be equal to 3 gamma minus gamma, which means that 3 is equal to 2 times of gamma, and hence gamma must be actually equal to 3 by 2. This is actually the option which is present in this option D here. Okay, तो इस तरह से हमने सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में का जो रिलेशनशिप होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर का, वो यूज करके या गामा निकाल के लिया. यस, चलो 22nd, लेट अस ट्राई. The Carnot engine takes 3 into 10 raised to 6 calorie of heat from the reservoir at 627 degrees Celsius. Okay, and gives it to sink at 27 degrees Celsius. Then the work done by the engine is, and here the options are
Yes, so these are the options. Okay, so अभी देखो ये उसमें दिया हुआ क्या है, पढ़ो एक बार ठीक से कि Carnot engine takes 3 into 10 raised to 6 calorie of heat from the reservoir at 627 degrees Celsius. That means what is this 627 here? ये 627 डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है वो क्या है? T1 है या T2 है? देखो इंजन जो हीट लेता है तो जिससे वो लेता है तो वो तो सोर्स होता है या रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T1 कहलाता है. तो दिस विल बी T1 एक्चुअली. ओके, सो T1 is given here to be 627 degree Celsius. Okay, and gives it to the sink at 27 degree Celsius. तो जो जिसको वो रिजेक्ट करता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो T2 कहलाता है जो कि 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. बट एज वी नो दैट दिस टू बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन. सो 627 प्लस 273 कितना बनता है? 900. करेक्ट है? yes, it will be 900 Kelvin and here it will be 300 Kelvin. Correct है? And just we get this T1 and T2, we can immediately get the efficiency of that heat engine, right? So efficiency can be obtained to be 1 minus T2 upon T1, which is actually going to be 1 minus T2 means 300 upon T1 means 900. Correct है? Which is actually going to be 0 0 cancel and we are left with 1 minus 1 by 3, which is going to be 2 by 3. Correct hai? Yes, but we already know that the efficiency is actually defined as the work done upon Q1. Correct hai? So we want to find out this work done here, and Carnot engine takes this 3 into 10 raised to 6 calorie of heat from the reservoir that is given. That means Q1 is given here. ये कौन है? Q1 है ये Q1. Okay, तो Q1 दिया हुआ है तो इससे W निकालना कौन सी बड़ी बात है? We can find it out easily because we know that eta is 1 by 3. So this 1 by 3 must be actually equal to W upon Q1, where Q1 is going to be 3 into 10 raised to 6. And if we just cancel this 3 here, then we get work done immediately, that is 10 raised to 6 joules, and which is there in this option. Okay, ये कैलोरी में दिया हुआ है, राइट? देखो तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वो कैलोरी में है, तो इसलिए वर्क डन जो आएगा वो भी कहाँ पे आएगा? कैलोरी में आएगा. करेक्ट है? So here it is going to be in calorie only. But if you want to convert it into joule, because options are going to be in joule, so you have to convert this into joules. So we know that 1 calorie is always equal to 4.2 joules, right? So we can say that it will be 4.2 into 10 raised to 6 joule, because 1 calorie is 4.2 joule. Okay, तो ये कैलोरी और जूल के बीच में का जो रिलेशनशिप है वो यूज करके हमको W का वैल्यू मिल गया, वर्क डन मिल गया. दैट इज गोइंग टू बी 4.2 into 10 raised to 6, राइट? यस, एफिशिएंसी इज 2 by 3. अच्छा, राइट, सॉरी 2 by 3 है ना एफिशिएंसी. करेक्ट. एफिशिएंसी यहाँ पे हमने 1 by 3 कैसे लिया? ये 1 by 3 गलती से मैंने ले लिया. ठीक है, so it should be 2 by 3 and hence W will be actually 2 into 10 raised to 6, and it should be actually 8.4 just multiplied by 2, and here it will be the B as a correct option. Okay, B will be the correct option. 8.4 into 10 raised to 6 joule. Okay, and that's it. Okay, so these are the questions. Okay, so let us stop here, and we declare that this chapter has been finished here. थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे खत्म होता है. आगे का जो चैप्टर है तो वो हम ऑसिलेशंस नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे. ठीक है.
इसमें किसी को कुछ डाउट है या किसी को कुछ पूछना है?